الله 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 तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन। मुहम्मदुन 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 सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर ईमान प्रोग्राम में आपका हम खैर मकदम करते हैं। आज आप जुम्मा मस्जिद मदरसा रोज़बेल की जानिब से मुनक़्क़िदा जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। बाज़ाब्ता मजलिस का आगाज़ कलम पाक की चंद आयत मुबारका की तिलावत से हुआ। साथ ही सूरा अलम नशरह का तर्जुमा भी आप समात कर सकेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीन आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व कान बिल-मुअ्मिनीना रहीमा। तहिय्यतुहुम यौमा यल्क़ौनहु सलाम व अअद्द लहु अजरन करीमा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يهديك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
قد ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je cherche protection avec Allah contre Satan le maudit. पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला से शैतान मरदूर से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Au nom d'Allah le clément, le miséricordieux. शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है. ألم نشرح لك صدرك Est-ce मुबाफिन ouvert pour toi de l'estomac? क्या हमने तुम्हारे सीने नहीं खोल दिया? ووضعنا عنك وزرك Et nous fincha des pilotes, toi de fardeau. और तुझ पर से तेरा बोझ हमने उतार दिया. الذي أنقض ظهرك किसी एक खास तले दो जिसने तेरी पीठ थोड़ी थी. ورفعنا لك ذكرك Alors nous finissons pour toi pour de renom. और हमने तुम्हारे जिक्र बुलंद कर दिया. فإن مع العسر يسرا Alors sans doute avec difficulté et non facilité. बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है. إن مع العسر يسرا Sans doute avec difficulté et non facilité. बेशक मुश्किल के साथ आसानी है. فإذا فرغت فانصب Alors que de terminer la prière, fais effort dans invocation. जब तुम नमाज से फारिग हो तो दुआएं मेहनत करो. وإلى ربك فارغب Et suppliez tes Seigneur même. और अपने परवरदिगार ही की तरफ रुग़बत करो. صدق الله العظيم. बाद अज़ां रोज़बेल की जुम्मा मस्जिद मदरसे के तलबा ने बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस तरह हाज़िरी दी. फैज़ान मोहम्मद हर शख्स की गर्दन पे है एहसान मोहम्मद. तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला. बेटी रोने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद
बोले उठा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदा या मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदा या मेरी लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदा या मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदा या मेरी इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत या रब इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत या
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफ़े माशूक़ कुछ कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफ़े माशूक़ कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। उधर भी होगा, उधर भी है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। उधर भी होगा, उधर भी है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي प्यारे बाबा जान, मेरे दिल में है अरमान, मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे दिल में है अरमान, मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। सुना है हाफिज कुरान के माँ बाप को जन्नत मिलती है, ताज फखर उनके सर पर शान और इज्जत मिलती है। मुझे भी ऐसा मौका दे, जल्दी दाखिला दिलवा दे। मुझे भी ऐसा मौका दे, जल्दी दाखिला दिलवा दे। बनूंगा मैं हाफिज कुरान, बनूंगा मैं हाफिज कुरान, बनूंगा मैं हाफिज कुरान, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल
طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي रब की ज़मीं या जम की ज़मीं कोई आया नहीं फातिमा की तरह रब की ज़मीं या जम की ज़मीं कोई आया नहीं फातिमा की तरह कह रहे हैं अली जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फातिमा की तरह कह रहे हैं अली जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फातिमा की तरह जाने कुर्बान क्यों ना हो सरकार की अपनी प्यारी सी बेटी की मुस्कान पर जाने कुर्बान क्यों ना हो सरकार की अपनी प्यारी सी बेटी की मुस्कान पर चेहराए मुस्तफा को कोई देख कर मुस्कुराया नहीं फातिमा की तरह चेहराए मुस्तफा को कोई देख कर मुस्कुराया नहीं फातिमा की तरह अरब की ज़मीं या जम की ज़मीं कोई आया नहीं फातिमा की तरह कह रहे हैं अली जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फातिमा की तरह सैयदा ताहिरा और ज़हरा बतुल कितने दिलकश तुम्हारी ये अलकाब हैं सैयदा ताहिरा और ज़हरा बतुल कितने दिलकश तुम्हारी ये अलकाब हैं आबो की बुलंदी है ये मर्तबा किसने पाया नहीं फातिमा की तरह आबो की बुलंदी है ये मर्तबा किसने पाया नहीं फातिमा की तरह अरब की ज़मीं या जम की ज़मीं कोई आया नहीं फातिमा की तरह कह रहे अली जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फातिमा की तरह उसके बाद मदरसे ही के एक तालिब इल्म ने ये मुख्तसर बयान फरमाया Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout d'abord, nous remercions Allah Ta'ala qui fait de nous l'occasion pour nous mettre nous présence dans sa mahfil-là. Aujourd'hui, je propose l'éducation islamique et l'importance dans la vie de chaque musulman. Dans Surah Taha, Allah Ta'ala peut dire Rabbi zidni ilma. Oh Allah, augmente ma connaissance. Ça, tibut ayat Quran là, lit aussi un doigt que chaque musulman a besoin de lire tous les jours, que pour barakat sa doigt là, il peut aider nous pour augmenter nos connaissances. Sharia fait mettre beaucoup l'emphase sur l'éducation et surtout l'éducation islamique. Aujourd'hui, quand nous guettons dans la case de chaque musulman, nous pourrons remarquer qu'ils ont fait beaucoup de progrès côté académique. Mais beaucoup parmi eux ne pas vivre la vie d'après le principe de l'islam et alors ils ont une bonne éducation islamique. Il y a beaucoup de manque du respect et beaucoup de problèmes qui peuvent augmenter entre les enfants et les parents.
Et pourtant, nous avons bonne éducation. Mais alors, qui nous manquait? Ce qui nous manquait, c'est une bonne éducation islamique, une bonne base de nous dire. Dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, recherche l'éducation islamique, est obligatoire pour chaque musulman, homme et dame. Ce hadith-là peut montrer nous l'importance pour nous apprendre nous dire comment besoin. Quand un enfant fait prendre naissance, c'est l'éducation islamique commencée depuis là-bas même. Nous pouvons donner azan dans ses oreilles côté droite et iqamat dans ses oreilles côté gauche. Quand nous faisons ça, nous pouvons finir montrer aux enfants-là qui Allah Ta'ala lui-même les plus grands et qui lui-même les nous robe. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même lit le messager d'Allah. L'éducation islamique, c'est ça même chemin qui peut mener nous vers Jannat. Mais à ce temps, quand un enfant finit prendre naissance et quand il peut grandir, ses parents ont besoin d'envoyer madrasa pour qu'il gagne sur l'éducation islamique comme a besoin et pour qu'il soit capable de comprendre par le message et par l'autre que Allah Ta'ala fin envoyé. Et aussi, les enfants-là, pour capable vivre d'après le principe de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Mais si un parent pas fin assume ses responsabilités, pas fin envoie ses enfants à la madrasa, ou alors pas fin faire gagner l'éducation islamique comme a besoin, alors chaque mauvaise action que ces enfants-là font, sa parent-là peut être responsable de sa mauvaise action-là. Mais au cas contraire, si un parent assume ses responsabilités et envoie les enfants à la madrasa ou fait gagner une bonne éducation islamique, alors pour l'ordre Allah Ta'ala, chaque bonne action que ces enfants-là font, sa parent-là gagne ce savoir, le dunya et aussi dans l'akhirat. L'éducation islamique est divisée en plusieurs catégories. Première catégorie, c'est l'éducation religieuse. Quand les enfants là pour al-madrasa, avant tout, ils pour apprendre à lire kalima. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils pour apprendre à lire namaz et aussi lire Coran. Et quand ils pour apprendre à lire Coran, ils pour apprendre à lire Coran avec un bon tajwid. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith fin dire, meilleur parmi eux, c'est celui qui apprend le Coran et qui enseigne les autres. Ce hadith-là peut montrer nous l'importance pour nous apprendre le Coran et aussi pour nous propager l'éducation qui nous fait gagner et non seulement nous garder pour nous. Donc, les parents ont besoin d'envoyer leurs enfants au madrasa pour qu'ils soient sortis victorieux le dunya et dans l'akhirat aussi. Deuxième catégorie, c'est l'éducation morale. C'est-à-dire les enfants là se comportent. Ils pour apprendre pour avoir un bon comportement dans la société. Ils pour apprendre cause la vérité et toujours être honnête. Aussi, ils pour apprendre pour avoir un respect pour les autres, ban du monde qui est plus âgé qu'il est et aussi ban ceux qui est plus jeune qu'il est. Quand les enfants là pour apprendre toute sa bonne qualité là, ils pour gagner facile pour les intégrer dans la société. Troisième catégorie, nous pour cause l'éducation physique. C'est-à-dire les enfants là sur l'école. Ils pour apprendre l'importance de taharat. Dans un hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dire, taharat est la moitié de l'iman. Cela peut montrer nous l'importance de taharat. Si peu de taharat, les enfants là pas capables de pratiquer ce ban ibadat correctement. Si un djimoun lui met tout ce enseignement là dans la vie de tous les jours, alors il peut gagner succès le dunya et dans l'akhirat et par le d'Allah Ta'ala, il peut réussir dans tout travail qu'il est poussé faire. En tant que musulmans, nous devons pour nous apprendre plus l'éducation islamique et qui nous donne même l'importance qui nous donne l'éducation académique. Wa ma alayna illa al-balagh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
फैजान मोहम्मद हर शख्स की गर्दन पे है एहसान मोहम्मद। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। सुहाना सुहाना दिलारा मदीना, हर आशिक की आंखों का तारा मदीना। सुहाना सुहाना दिलारा मदीना, हर आशिक की आंखों का तारा मदीना। सभी आशिक मुस्तफा कह रहे हैं, सभी आशिक मुस्तफा कह रहे हैं, हमें तू है जन्नत से प्यारा मदीना। मदीना मदीना हमारा मदीना। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। पहाड़ों में भी उसने कांटे भी दिलकश, पहाड़ों ने कैसा निखारा मदीना। पहाड़ों में भी उसने कांटे भी दिलकश, पहाड़ों ने कैसा निखारा मदीना। मदीना के जलवों पे कुर्बान जाओ, मदीने के जलवों पे कुर्बान जाओ, है कुदरत ने कैसा निखारा मदीना। मदीना मदीना हमारा मदीना। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। वहाँ प्यारा काबा, यहाँ सब्ज़े गुंबद, वो मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना। वहाँ प्यारा काबा, यहाँ सब्ज़े गुंबद, वो मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना। पियोगे काबा पियो आब ज़मज़म, पियो काबा पियो आब ज़मज़म, फिर आके देखो तुम्हारा मदीना। फिर आके देखो तुम्हारा मदीना। मदीना मदीना हमारा मदीना। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। फैजान मोहम्मद हर शख्स की गर्दन पे है एहसान मोहम्मद। ये कहती थी घर घर मैं जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर मैं जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं, बड़े
नकीरें ने जब मेरी तुरबत में आकर कहेंगे ज़ियारत का मुज़दा सुना कर। नकीरें ने जब मेरी तुरबत में आकर कहेंगे ज़ियारत का मुज़दा सुना कर। उठो बहरे ताज़िम नूरुल हसन अब, उठो बहरे ताज़िम नूरुल हसन अब। लहद में रसूले खुदा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर मैं जाकर हलीमा। ये कहती थी घर घर मैं जाकर हलीमा। मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर। बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर। मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप रोज़बेल की जामा मस्जिद मदरसे की जानिब से मुनक़िदा जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सालाना जश्न तक़सीम इनामात की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। तक़रीब सईद के पहले मुक़र्रिर मौलाना मोहम्मद नादिर रुजुबाली ने अच्छे अखलाक यानी गुड मैनर्स की अहमियत पर बात की। Allah subhanahu wa ta'ala peut faire mention dans le Coran. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fait créer l'insan dans la plus meilleure forme qui est capable d'exister. Le mot ahsan est dans deux mots, deux quelque chose différent. Un husn et un ahsan. Husn, c'est un ism am et ahsan, c'est ism tafdil. Pareil comment quand on dit akbir veut dire grand. Mais quand on dit akbar, plus grand encore. Pareil comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala fait servir le terme ahsan. Fait servir ism tafdil pour faire nous comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait créer nous dans plus meilleure, plus jolie forme qui est capable d'exister. Puis dans plus jolie forme, plus joli modèle qui est insan. Et quelque chose qui fait nous vivre plus meilleur, quelque chose qui fait nous vivre plus joli, c'est pas nous partir l'extérieur de nous l'écho. C'est à cause de nous l'intérieur même qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait considérer nous comme meilleure créature et fait considérer nous comme ahsan fi taqwim. Aujourd'hui, les malchances qui nous passent nous les temps pour perfectionner nos parties de l'extérieur. Nous finissons nos parties de l'extérieur, plus l'importance qui nous parties de l'intérieur. Aujourd'hui, toute qualité de la crème nous peut servir, toute qualité de salon nous peut visiter, juste pour faire nous-mêmes une jolie. Mais nous finissons oublier que ça joli là, il pas trouve des hauts, ça les trouve en dans nous-mêmes. Et pour nous l'intérieur une jolie, c'est quelque chose qui bien énorme, c'est un joli akhlaq, c'est une bonne manière et un bon caractère.
سئل بعض الحكماء Bandi moun pieux fin être questionné بماذا شرف الله الإنسان avec quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala fin faveur insan أفبالطاعة أو ألوان الطعام est-ce que li à cause sa bonne qualité manger qui insan manger là قيل كلا en vérité pas ça فالخنزير أكل أكثر منه qui ban poc je mange plus beaucoup qu'insan قال alors fin d'être demandé pour une deuxième fois أفباللباس والزينة est-ce que l'habillement et beauté de un insan est-ce qu'il y a comme ça qui Allah subhanahu wa ta'ala fait faveur à l'insan قيل كلا pas vraiment فالطاووس أجمل منه qui pas quand les plus jolis qu'insan قال أفبالغلبة est-ce que parce que sa puissance, sa capacité, la force qui est un insan lié dans là قيل كلا pas vraiment فالأسد أشد قوة qui est un lion sa puissance le plus qu'un insan قال أفبالعظم الجثة est-ce que parce qu'insan il y a un gros écho avec lui قيل كلا فالفيل أعظم منه pas vraiment un éléphant sur l'écho est plus gros qu'insan قال فبماذا alors finalement demandez à sa bande moun pieux là à cause qui quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala fin fait faveur à l'insan قيل alors fin gain réponse بالعلم وخلق عظيم qui dit quelque chose à cause ça dit quelque chose là Allah subhanahu wa ta'ala fin fait faveur à l'insan un c'est à cause de l'éducation et deuxième c'est un bon caractère un bon akhlaq pas oublier avec sa même mission Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie un Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur la terre pour perfectionner caractère et bonne manière de man insan quand nous étudions la vie de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam nous vous trouvez dans tout aspect de nous la vie dans n'importe quelle situation n'importe qui s'en a nous été ou envie qui veut dire un beau akhlaq un beau comportement une bonne manière ou envie connaître comment pour comporter où dans la société dans le pays que tu peux vivre ou envie connaître comment bien comporter où dans la vie conjugale étudier la vie de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam au fin trouve un diamant quand il y a un diamant en bas de la terre il y a une roche normale mais après que bandimoun fin coupe sa diamant là fin coupe sa roche là fin donner sa forme fin polili il vient ça même un de ban plus cher roche qui capable est dans le monde Jama'atul Muslimin ou akhlaq aussi pareil si nous pourrons ban moyen pour capable perfectionner nos akhlaq ban moyen pour capable polir nos akhlaq afin qu'il nous vienne un des ban plus meilleurs insan devant Allah subhanahu wa ta'ala alors c'est une tâche qui n'est pas impossible, qui est bien facile mais malheureusement nous insan nous donnons l'importance juste nous l'extérieur rappelle bien Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un insan sur l'extérieur Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith Bismillahir Rahmanir Rahim Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum Aujourd'hui, moi et vous qui nous peut passer nous les temps de sajao nous-mêmes Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Allah subhanahu wa ta'ala li pas guet visage un insan li
Allah subhanahu wa ta'ala li paget leko an insan walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Si Allah subhanahu wa ta'ala li get un insan sur le cœur et li get un insan sur action. Aujourd'hui, nous l'habillement qui joli, nous l'habillement qui de nos jours peut être plus joli puis aller même, mais nous le cœur li encore noir comme un charbon. Jamaatul Muslimin, moi et vous-même, nous faisons l'intention qui, à partir de nos jours, à partir d'aujourd'hui, nous pouvons faire nos efforts au maximum pour nous capables de perfectionner nos akhlaq, pour nous capables de perfectionner nos caractères, nos manières, afin que demain, devant Allah subhanahu wa ta'ala, nous vînes vraiment ban meilleur insan et ban plus joli umma parmi Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. फैजान मोहम्मद हर शख्स की गर्दन पे है एहसान मोहम्मद बुला लो फिर मुझे शाह बहरो पर मदीने में बुला लो फिर मुझे शाह बहरो पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में बुला लो फिर मुझे शाह बहरो पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊँ तेरे दर पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊँ तेरे दर पर मदीने में न दौलत दे न शोहरत दे मुझे बस ये शहादत दे न दौलत दे न शोहरत दे मुझे बस ये शहादत दे तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में न मदीने इसलिए आता रे जानो दिल से है प्यारा मदीने इसलिए आता रे जानो दिल से है प्यारा के रहते हैं मेरे आका मेरे दिल पर मदीने में के रहते हैं मेरे आका मेरे दिल पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में फैजान मोहम्मद हर शख्स की गर्दन पे है एहसान मोहम्मद आका के अता वो नूर अली ज़हरा की कले वलियों के वले
के कले वलियों के वली हसनैन के दिल हसनैन के दिल उस्मान के नयन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन है तुम पे फिदा है तुम पे फिदा सब तन मन धन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। बाद अज़ां जुम्मा मस्जिद के प्रेसिडेंट जनाब निसार रहमतुल्लाह साहब ने वालिदैन से मुखातिब होकर कहा कि ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों की ज़िंदगी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में ढालने की कोशिश करें। Mais alhamdulillah, qui nous demande Allah subhanahu wa ta'ala doit, qui donne nous basti, qui nous ici ban parents. Pour machin-là, pour les enfants, viennent un alim, viennent un hafiz, c'est qu'il commence dans la case. Tarbiyat là commence dans la case. Nous get un simple exemple que nous, Ahl Sunnat, nous, Jamaat, nous, habissé, prend ça, nous, habissé, fait sur Urush Sharif. Nous disons, quand nous pécons, Rosé Pâques, nous disons, qui tarbiyat, c'est dans la case. Ça veut dire, tarbiyat là, il commence depuis d'enfant sur maman. Quand son maman envoie les madrasa, pour faire commencer contre madrasa, au stade, il y a bismillah. Il y a bismillah, il continue jusqu'à environ 17 sipara. Au stade, il y a un choc. Et bien, tu fais que le premier jour, tu rentres madrasa. Et bien, qui n'arrive à tenir tout ça là? Il dit, quand je suis dans ventre, mon maman, c'est hafiza 17 sipara. Qu'est-ce ça l'effet là? Aujourd'hui, la science peut dire qu'un enfant dans ventre sous maman, la science prouvée que ça l'effet qu'il y fait là. La science aujourd'hui prouvée que ça allaitement maternel pendant 2 ans qui nous négligeait. Nous pensions, ah ben moi là c'est boîte d'îlet. Ça boîte d'îlet là peut coûter nous sert. Pas que nous sert dans termes casse. Nous tout une casse aujourd'hui. Peut coûter nous sert en termes de façon spirituelle. Quand nous commençons, vous connaissez aujourd'hui quand on peut guetter ou guetter l'actualité. Parents nous causent la vérité. C'est moi qui dis à mes enfants, mon papa dit ça pour vous prendre un exemple. Au contraire, nous l'exemple c'est Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Si nous les guettons encore, nous guetterons c'est pas que maman comment il prépare ce tarbiyat pour devenir chef de Ban Wali. Nous malheureusement aujourd'hui nous tous vous connaissez beaucoup de parents comme aux jeunes, les enfants négligement, mes enfants ils gagnent pension, ils prennent vos casses. Les temps où réfléchir les choquants. Mais les temps nous guette l'histoire. Nous commençons, nos enfants, nous faisons le travail. Pas mal pour moi, pas mal pour moi. Parce que ça peut arriver dans toutes nos familles ça. Madame là, mes enfants là après un mois c'est pas 3 mois gagnent le travail, ils rentrent travail. Les kids enfants là avec c'est pas d'une garderie. Les quittes avec une servante. Mais qui vous donne servante? Vous donnez du lait dans la boîte. Vous donnez manger dans la boîte, dans la pot. Ah, ben après, quand maman, papa, une vieille, il dit quand tu es comme disait, battre rentrer, pas faire mal. Quand moi, tu dis, tu dis, moi, du lait dans la boîte, et c'est moi, de toi, dans la boîte. Et c'est quand moi, tu dis, tu dois manger dans la boîte. Moi, de toi, manger dans la boîte, take away. Battre rentrer. Quand tu comme tu dis, tu pas faire mon hifazat. Tu pas gagner le temps pour moi. Moi je pas gagner le temps. Mon madame aussi pas gagner le temps. Nous pouvons une vérité qui nous peut vivre. C'est aujourd'hui nous bien saisir, nous réfléchir. Aujourd'hui, dawa, pas besoin de grand librairie, pas besoin de grand centre éducatif ça. Chacun dans la case, lui-même n'est capable de faire dawa avec ce comportement. Les malheureux aujourd'hui quand nous guettons la vie qui peut aller. इस तकरीब सईद के तीसरे मुकर्रिर मौलाना फयाज अहमद नईमी दामद बरकातुहु मालिया ने कुरान पढ़ने और कुरान सीखने की अहमियत पर जोर दिया। L'éducation pour nous apprendre jamais il est en retard. Si cette année-là pas capable faire des efforts l'année prochaine inchallah, ou réussir ou venir de parmi ban gagnant. À travers ça, moi pour tirer l'attention
vers une telle qualité jour. Ici, quand nous nous trouvons, nous pas réussi, nous regretter, nous gagnons encore l'occasion. Ça n'en est là, pas de passé, pas de récit, pas de mine de parmi les premiers. Nous sommes capables de faire des efforts. L'année prochaine, nous sommes capables de parmi les gagnants. Mais il y a un jour qui là-bas aussi pour une prize giving ceremony. Là-bas aussi pour faire annonce ban gagnant. Là-bas aussi pour faire annonce ban qui gagne succès. Là-bas aussi pour faire annonce pour honorer ban personne qui gagne succès. Définitivement votre figure pour éclairer. Définitivement ça ban personne quand je peux nous autres nom, je peux content. Dans le Coran fait une mention ça wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira. Zo qiyamat pour une certaine personne votre visage pour éclairer, pour rocher, pour munawwar en regardant votre Rabb quand vous gagnez ça, votre nom peut faire annonce qui dépend de succès. Mais ce moment-là pour une personne qui ont pour chagrin, pour un regret, en regardant sa personne qui fait un succès, vous aussi pour faire une absence, qui fait moi pas faire des efforts. Qui fait moi pas profiter dans la dunya, qui fait moi pas bénéficier dans la dunya, mais ça joue là sur regard n'est pas profitable. Ça joue là sur afsos, ça joue là sur regretter, n'est pas pour donner aucun profit, parce que pas pour encore l'occasion pour nous capables de corriger nous pas pour encore l'occasion pour qu'ils nous capables de faire des efforts pour qu'ils nous viennent de parmi les gagnants. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer Prize Giving Ceremony. Alhamdulillah, c'est un encouragement, mais à travers ça aussi, il est important. Comment les enfants qui ont pour mentionner, les enfants qui travaillent très bien, les enfants qui font des efforts, quand ils ont pour mentionner définitivement pour une sourire à leurs autres figures. Les autres parents aussi pour content, la famille aussi pour content. Mais le jour, c'est Prize Giving Ceremony, ça joue, c'est jour Qayamat. Ici, qu'on peut appeler les enfants. Et n'importe qui est dans le monde, qu'on fait graduation, qu'on fait Prize Giving Ceremony, c'est seulement appeler les élèves. Appelle seulement les enfants qui gagnent succès. Appelle seulement les enfants qui font récit. D'aucun podium pas appeler ça les enfants-là, les autres parents, les autres mamans, les autres papas. Qui a des enfants une classe de classe 8, qui ces enfants-là une classe de classe 8, bah on nous ces enfants-là, au lieu que ces enfants-là nous appellent ce maman, papa, nous on nous lit dans le monde péna. Mais zo qayamat, ça joue là pour un jour graduation, que Allah subhanahu wa ta'ala pour donner ban farishta, appelle tout ces enfants qui gagnent succès, ces personnes qui gagnent succès, appelle zot maman, papa. Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam في جاء حديث من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة. Celui qui n'apprend le Coran et fait amal d'après le Coran zo qayamat Allah pour appel saban personne là zot maman papa Allah pour donner farishta ulbisa walida pour honorer sa parent là et pour mettre la tête en telle qualité tâche qui sont rochini, sont nour, sont l'éclairage les plus fort qui soleil. C'est qui ça c'est mes parents qui viennent contribuer, c'est mes maman papa qui nous fait des efforts, c'est mes maman papa qui nous sacrifient les temps, qui nous donnent l'occasion aux aulades, aux enfants pour pratiquer ça là, pour apprendre le Coran, pour lire le Coran, pour faire ibadat. Quand ça mes enfants là une récit, Allah pour honorer ça mes enfants là, les parents au Qayamat qui a grâce à ces parents là, ces enfants là une succès, ces enfants là une récit, ces enfants là une kamiabi, ces enfants là aujourd'hui de Jannat, à grâce à ces parents-là, Allah pour appeler ces parents-là, pour honorer ces parents-là. Proche nassib, ces parents qui peuvent assister. Aujourd'hui, on peut donner l'occasion aux enfants, on peut sacrifier au temps, on peut contribuer, on peut faire des efforts. Il y a une telle qualité, l'éducation qui peut faire des efforts, qui pas seulement les profitables de la dunya.
dunya ce n'importe quelle éducation. Les enfants capables d'un dernier degré qui est dans l'éducation, ils gagnent ce diplôme, ils gagnent ce degré. Mais il n'est pas garanti que ça, l'éducation là, est profitable pour ces enfants-là, est profitable pour ses parents. Mais sans l'éducation, qui peut donner aux Hollande, peut donner aux enfants, le Coran donne garantie que définitivement, ça, l'éducation-là, est pour profitable pour ces enfants-là aussi, et aussi, est pour profitable pour ses parents, celui qui nous donne l'occasion sur Hollande. बाद अज़ां मेरे कारवां मौलाना शमीम खुदादीन दामद बरकतुमालिया ने वालिदैन को ये बात समझाने की कोशिश की कि औलाद को दुनियावी खुशी फराहम करने के साथ साथ ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को आखिरत के लिए भी तैयार करें। Dunia qui nous peut vivre, nous tous nous peut vivre dans une tension, tout le monde, et il y a beaucoup de fikar dans eux, beaucoup de tracas, et surtout quand on est des enfants. Quand on finit mettre des enfants, le terre, où il y a beaucoup de tracas, où il y a beaucoup de fikar pour ces enfants-là. Quand ces enfants-là, partent encore, viennent le dunia, ces enfants-là, ils sont encore dans le ventre de maman. Maman, papa, dépensent beaucoup l'argent de ces enfants-là. Les enfants encore dans le ventre. Soit c'est arrivé peine à les enfants aussi, ou dépensent beaucoup l'argent pour qu'ils soient capables d'être aulad. Et c'est tout, on demande droit pour qu'Allah de nous, aulad et salih. Demain, ces enfants-là, ils finissent prendre naissance ou toujours investir au lit. Les enfants-là, ils grandissent ou investissent l'argent au lit. Ils partent à l'école ou dépensent l'argent au lit. Demain, ils partent au collège ou continuent à dépenser. Les parents qui ont des enfants à l'école, au collège, connaissent combien ils dépensent. Demain, les enfants-là, s'il y en a pour aller à l'université, vous connaissez combien ils dépensent. Après ça, vous pouvez faire un docteur, un ingénieur, ou capable de faire un alim, ou capable de faire un cheikh. N'importe qui vous fait venir, là aussi, vous pouvez encore dépenser aux enfants. Les enfants-là, ils continuent à grandir, ils arrivent à lire pour mourir les enfants-là, ou investir au lit. Les enfants-là, ou gagnent ce tracas encore, ou rangent la case pour lui, ou acheter le terrain pour lui, ou continuent à investir même. Quand un jour vous gagnez l'occasion, prenez une plume, prenez un papier. Combien de millions vous investi dans vos enfants? Quand vous gagnez l'occasion, c'est balance ça compte là. Depuis les enfants qui vivent dans le ventre, vous faites une grande lit, vous faites une moyenne, malgré vous faites une dada, vous faites une dadi, vous faites une nana, vous faites une nani, mais vous pouvez continuer à dépenser aux enfants. Et quand vous pouvez dépenser, il n'y a pas un petit l'argent. On dépense millions de millions. Et dans maman, papa, aujourd'hui, puis encore dormir le dette. Puis vivre le dette. À cause des enfants. Vous pouvez gagner les enfants-là sur tracas. Vous pouvez gagner tracas, les enfants-là. Molé qui mes enfants vivent, errer le dunya. Moulé qui mes enfants, les prospérer le dunya. Moulé qui mes enfants, les peine aucun tracas, les peine aucune difficulté. Moi, maman, papa, je suis capable de manger bouillon bread, je suis capable de manger du pain sec, je suis capable de vivre dans la castole, mais seulement mes enfants, ils mangent biryani tous les jours. Mes enfants, ils mangent du riz frit tous les jours. Mes enfants, ils mangent bol renversé tous les jours. Mes enfants, ils ont bon manger. Mes enfants, ils ont la case béton. Mes enfants, ils vivent dans un château. Mes enfants, ils vivent dans un mahal. Tous parents se désirent ça. Tous parents se désirent. Ou envie de trouver aux enfants errer. Ou pas les trouver aux enfants souffrir. Les enfants finissent malades. Les enfants malades. Les enfants finissent malades graves. Maman, papa, ce sommeil finit envolé. La paix et tranquillité enlevée dans la case qui fait des enfants malades. Des enfants malades, une maman pas capable de quelque chose d'enfant malade. Un papa pas capable de quelque chose d'enfant sur aulad souffrir. Il est capable de vendre ce terrain, il est capable de vendre tout quelque chose. C'est à cause sur aulad. Bon, ben, frère, en islam, c'est qu'il faut faire ou comprendre. Pour ça, aulad, qui vous fait mettre le dunya là, beaucoup de tracas ont gagné pour lui, beaucoup de fikal ont gagné pour lui. Mais seulement ça tracas, fikal qui vous peut gagner là, vous pouvez gagner seulement pour dunya. Ça dunya là, il pour quelques jours, quelques minutes, quelques secondes, ça. Nous disons, mon compte à mes enfants, nous disons, mon compte à mes enfants. Et quand vous êtes là, en réalité, nous pouvons compter nos enfants seulement pour le dunya. Pour le dunya, nous pouvons gagner ce tracas.
grand matin, tantôt, puis un tracas, à quitter l'école, à quitter les leçons. Même dans l'époque cyclone. Parents peuvent devoir professeur, est-ce qu'il y a une leçon aujourd'hui? Cyclone. Parents peuvent un tracas aux enfants pour perdre un jour l'école. Il y en a pour faire si là. Demain, quand le résultat est si venu, je ne sais pas quel est le résultat pour venir, nous payons beaucoup de tracas, ces enfants-là, sur le côté académique. Et académique, là, c'est seulement pour Dunya, ils pourront nous servir seulement l'eau Dunya. Ils pourront nous servir seulement l'eau Dunya. Je ne pas dire non. Nos enfants, besoin gagnent l'éducation académique. Nos enfants, besoin des enfants professionnels. Nos enfants, besoin des docteurs. Nos enfants, besoin des ingénieurs. Nos enfants, besoin des professeurs. Nos enfants, besoin des infirmiers. Nos enfants, besoin des enfants professionnels. Mais en même temps, ces enfants-là ont besoin de gagner tracas sur l'akhirat. Il n'est pas possible qu'il y ait une maman et un papa. Les comptent sur les enfants seulement pour dunya. Il n'est pas possible qu'il y ait une maman et un papa comptant sur les enfants seulement pour dunya. Coran Sharif fait mention, Allah Ta'ala peut dire Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Les enfants finissent blessés, au sommeil finissent envolés. Les enfants finissent malades, ou pas capables de manger, ou stressés, ou tension finissent baissée, tension montée. C'est-à-dire ces enfants-là intégrales. T'allez aux propres enfants intégrales. Mort, n'est pas impossible ça. Mort, n'est pas guette là, n'est pas guette couleur, n'est pas guette nationalité. T'allez aux enfants intégrales. Allah Ta'ala peut dire Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Oh, ben celui qui a iman, préserve vous-même. Et préserve vos enfants, préserve votre famille, qu'on dit fait l'enfer. Préserve vous-même, préserve vos enfants, préserve votre famille. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Préserve vous contre sa grande fait qui finit préparé pour ban celui qui finit désobéir à Allah avec son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. En tant qu'un parent, en tant qu'une maman, est-ce qu'il est content aux enfants ou vous dites moi oui? Pour poser une question, vous dites oui, moi extra content aux enfants. Mais comment possible? Vous comptez aux enfants seulement pour quelques minutes, l'osa dunya là, ou pas content aux enfants pour akhirat. Dit fait l'enfer, finalimé. Dit fait l'enfer, finalimé, pertan. Pertan, ben celui qui va faire prendre sa dîne là, pas faire gagner connaissance dîne, pas faire connaître la différence entre halal et karam, pas faire connaître la différence entre bon avec mal. Demain aux enfants intégrales, dans quelles conditions aux enfants pour être? Dans quelle position ils peuvent être? Est-ce qu'ils peuvent gagner sa traka là? Est-ce qu'ils peuvent gagner sa fikal là? Ou même en tant qu'une maman, un papa, combien d'investissements vous faites là aux enfants? Est-ce que vous faites donner sa qualité talim là, sa qualité l'éducation là, qui t'allait quand vous faites vieillir, aux enfants les capables de faire au tazim, aux enfants les capables de faire au khidmat, aux enfants capables de nous un boucher manger, les capables de nous un lukma manger, aux enfants capables de respect ou est-ce que vous faites donner sa qualité l'éducation là? Est-ce que vous faites donner aux enfants aujourd'hui pourquoi maman papa plaignait? Mes enfants pas guette moi, mes enfants pas de moi manger, mes enfants pas de moi l'argent, mes enfants pas faire mon khidmat. Mais est-ce qu'ils vous préparent ces enfants-là de cette façon-là pour qu'ils ces enfants-là capables de faire au tazim, les capables de faire au izzat. Demain quand vous finissez vieillir, les capables de faire au khidmat. Demain t'allez ces enfants-là intégral. Vous pouvez dire mon fils fait beaucoup d'affaires pour mes enfants. Vous fait beaucoup de sacrifices pour mes enfants. Demain, si ça arrivait ces enfants-là, ils pas fin gagner sa l'éducation islamique là. Demain les intégral. Si arrivé ces enfants-là, ils arrivent à lire pour les rendre dans différents l'enfer. Premier accusé, premier dimoun qui ces enfants-là pour accuser, c'est son propre maman, son propre papa. Si arrivé à nos enfants, ils pourront dans l'enfer parce que maman, papa, pas fin donne aux enfants l'éducation islamique. Ces enfants-là, ils pourront qui sont propre maman et propre papa. Ou qui viennent faire, ils investir beaucoup dans nos enfants. Ils investir beaucoup dans nos enfants. Mais ça même enfants, jour Kayamat, ils vont dire, oh Allah, si aujourd'hui, je vais faire réussir rentrer dans le Jannat, je dis à cause de mon maman, à cause de mon papa. Nous faisons droit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Suppliez mes parents, suppliez mes parents, pas à cause moi, à cause Allah, avec le Rasoul. Donne aux enfants sa l'éducation là. Donne ces enfants-là l'éducation qu'ils méritent. En même temps, on donne ce côté académique. Donne-lui sa l'éducation là. Fais ces enfants-là venir pratiquant. Inch'Allah,
ou entre qu'un maman et un papa, ou pour vivre avec le nez et le dunya, ou pour vivre avec le nez, avec izzat le dunya, ou pour vivre en paix le dunya, et demain quand ou intiqal, incha'Allah, pas barkat ou aulad, pas barkat aux enfants, Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire sa maman là, pour faire sa papa là, sur qabar bin al-nizan de jannat. Pas barkat ou aulad, n'a pas sous-estimé aux enfants. Les enfants là, alhamdulillah, un aulad ça. Faire ces enfants-là, venir hafiz, venir alim, donner l'éducation académique, en même temps donner sa l'éducation, digne là aussi, pour qui demain ces enfants-là, les capables de faire la différence entre halal et karam, bon avec mal. Quand il peut marcher le chemin, Dimoun pour dire ça, bah un tel ce grand son ça, bah un tel ce tu fais ça, tu fais là grand son là pour moi avec un donné, avec un izzat. Quand il est capable de avec donner avec izzat, quand ces enfants-là, ils font gagner sa connaissance, digne là, ils font connaître shariat et mutahara. Allah subhanahu wa ta'ala donne de tout jazaï khair, wa ma alayna illa al-bala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. नाजरीन, रोज़बेल की जुमा मस्जिद मदरसे की जानिब से मुनक़्क़िदा सालाना जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो सलाम और दुआ से अख्तिताम पसीर हुआ। इससे पहले बच्चों में तहाइफ भी तक़सीम किए गए। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अगली मुलाकात तक अनवर को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काश महशर में जब उनकी आमद हो और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनके शौकत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم إني أعوذ بك من شر
سمعي وبصري ولساني وقلبي ومن شر مني. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله 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 तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वसक़लैन। मुहम्मदुन 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 सय्यिदुल कौनैन वसक़लैन वल्फरीक़ैन मिन उर्ब वमिन अजम। मौलाया